अच्छा प्यारे बेटे, आज हम ना गोगो की पहली किस्त देख रहे हैं। अच्छा, ठीक है, वो तो मुझे बड़ी आसानी से आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। 1 मिनट के अंदर क्रॉस कर दूंगा। इसमें हम पता क्या सीखेंगे कि किस तरह से दूसरे लोगों को हेलो करते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन कैसे कराते हैं, अच्छा, अपना नाम कैसे बताते हैं, अच्छा, और किसी का नाम कैसे पूछते हैं, है ना? अच्छा, हाँ, चलो स्टार्ट करो। हेलो, हेलो। अच्छा बेटे, सबसे पहले उन्होंने एक दूसरे को हेलो कहा है। हेलो, हेलो। My name's Tony. What's your name? My name's Tony. What's your name? बेटा, ये जो माय नेम इज टोनी है ना, इसका मतलब है मेरा नाम टोनी है। What's your name? आप तुम्हारा नाम क्या है? Name, name, name. My name's Tony. What's your name? आपने गौर किया कि ये जो गोगो है ना, ये कुछ समझ नहीं पाया। असल में ये गोगो पहली दफा मिलने आया है और ये जानवर है और इसको इंसानों की लैंग्वेज समझ नहीं आती। अच्छा, इंसानों की जुबान समझ में नहीं आती, तो इस वजह से वो परेशान हो गया। तो उसको समझ नहीं आई और वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा दोबारा दिखाता हूँ। Hello, hello. My name's Tony. What's your name? Name, name, name. My name's Tony. What's your name? My name's Gogo. अब उसको समझ में आ गया था कि ये नाम का पूछ रहा है। My name's Gogo. तो इसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम गोगो है। गोगो है। Tony, Tony. Hello, hello. My name's Gogo. What's your name? My name's Jenny. Hello, Gogo. How are you? How are you? I'm fine, thank you. अब उसने कहा हाउ आर यू और फिर जेनी ने कहा हाउ आर यू। हाउ आर यू का मतलब क्या होता है? हाउ आर यू का मतलब है तुम कैसे हो। हाँ, सबसे पहले जेनी ने पूछा है हाँ, गोगो को। हाँ, ये देखना। हाँ। My name's Jenny. Hello, Gogo. How are you? जेनी ने गोगो को पूछा हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाँ, तो गोगो को समझ नहीं आई, तो गोगो ने यही हाउ आर यू जो है ना, वो जेनी को कह दिया। ये देखना, ये गोगो यही चीज दोबारा रिपीट कर देगा। जेनी को कह देगा हाउ आर यू। How are you?
अब ना जेनी उसको जवाब देगी आई एम फाइन थैंक यू। आई एम फाइन इसका मतलब मैं ठीक हूँ। हाँ, और थैंक यू का क्या मतलब? थैंक यू, थैंक्स। हाँ, थैंक यू का मतलब है शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। असल में जब कोई किसी को पूछता है कि तुम कैसे हो, तो फिर उसको थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि उसने इसका ख्याल किया ना। पापा कैसे का मतलब क्या होता है? आओ आगे देखो। Thank you. I'm fine, thank you. How are you, Tony? I'm fine, thank you. How are you? वो बिल्ली इससे डर गई है। Tony, Jenny. What's your name? My name's Gogo. What's your name? My name's Tony. How are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. What's your name? My name's Jenny. What's your name? My name's Gogo. Tony, Jenny, Gogo. Tony, Jenny. Goodbye, Gogo. Goodbye, Gogo. Goodbye, Jenny. Goodbye, Tony. अब उन्होंने कहा गुड बाय टोनी, गुड बाय जेनी। इसका मतलब है खुदा हाफिज जेनी, खुदा हाफिज टोनी, है ना? हाँ, जब ये इंग्लिश का लफ्ज़ है गुड बाय, तो जब कोई जाता है तो जाते हुए वो दूसरों को गुड बाय कह के जाए। My name's Gogo. What's your name? My name's Gogo. What's your name? My name's GB. My name's GB. ये इससे गलती हुई है। हाँ, हाँ, जीबी तो उसका नाम था, ब्लू वाली का। हाँ, तो इसने भी समझा कि शायद यही कहना है कि माय नेम्स जीबी, हाँ। लेकिन बाद में उसे पता चलेगा कि ये नाम पूछ रहा है, तो फिर वो अपना असली नाम बताएगा। My name's Tappy. What's your name? What's your name? Your name's Pod. Hello, my name's Jenny. Hello, my name's Tony. How are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you.